गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम भूपेश बंसल, डायरेक्टर आनंद प्रकाश एजुकेशनल एकेडमी और आप लोगों का मेंटर हूँ फिजिक्स के लिए। आनंद प्रकाश एजुकेशनल एकेडमी बिलासपुर में स्थित है। आज तक फिजिकल कोचिंग देते आ रहे थे और कई नीट और आईआईटीएंस को प्रोड्यूस कर चुके हैं। जितने लोग नीट और आईआईटी क्रैक किए हैं उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उनकी डेडिकेशन, उनका हार्डवर्क और उनका faith on Anand Prakash Educational Academy made them crack those exams. If you think you too can do it, then what you have to do, watch these videos, like the videos, subscribe to the channel and also attend the online classes which are going on since almost 2 months now, and also the physical classes whenever they start. So in class 11th we were talking about units and measurements. We had covered what are units, why they are important for us, what are SI units, what is the requirement for SI units, the 7 base units and the 2 supplementary units, and then we have discussed about measurement of mass, length and time. Today we have also discussed in brief the types of errors. Today we are going to discuss in detail what type of errors are there. There are basically 2 types of errors. One is systematic error, which come while doing the measurements, and the other is random error. Error होना कोई गलत बात नहीं है बच्चों, error हर जगह होते हैं। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे वहाँ errors आएंगे ही आएंगे. So we cannot totally eliminate the errors. Errors are part and parcel of every measurement. It depends on how precise the results we want that we can minimize the errors up to. इसका मतलब ये है कि हमें कितने प्रिसीजन रिजल्ट्स चाहिए, उस हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस हिसाब से हम प्रोसीजर यूज करते हैं और उसी हिसाब से हम एरर्स को मिनिमाइज करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर्स की। जैसे कि वर्ड सजेस्ट करता है सिस्टम, इसका मतलब है ये एरर्स सिस्टम में जनरेट होते हैं। इसमें एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आते हैं, जैसा कि अगर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, या इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर रेंज में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कारण से हमारे को इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मिलते हैं। इन एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट, by changing the instruments and seeing if we are getting the same results or we are getting different set of results. So instrument errors can be eliminated by changing the instruments. Second is the least count error. अगर मुझे 1 मिलीमीटर की स्केल है मेरे पास और मुझे 11.6 मिलीमीटर नापना है, तो मुझे इसमें ये 0.6 मिलीमीटर एस्टिमेट करना पड़ता है. I cannot measure it because I can see either 11 mm or 12 mm on the scale. So this 0.6 is the estimated value. So this is also called the instrumental error or the least count error. ये least count हम लोग reduce कर सकते हैं by using better precision instruments या better range instruments जिनकी range और कम हो. जैसे एक मीटर टेप की जगह मैं वर्नियर कैलिपर यूज करूंगा तो उसमें मैं 0.1 mm नाप सकता हूं, लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट 11.63 की है देन आई हैव टू गो इन फॉर द स्क्रू गेज. बट अगर मेरा एक्सपेरिमेंट डिमांड करता है कि मुझे उतने प्रिसाइज रिजल्ट्स नहीं चाहिए, देन आई कैन कंटिन्यू मेजरिंग इट विद द मीटर स्केल आल्सो. सो लीस्ट काउंट एरर्स. थर्ड इज द ह्यूमन एरर्स. ह्यूमन एरर्स बेसिकली एरर्स होते हैं जो कि हमारी निग्लिजेंस के कारण सिस्टम में आते हैं. आई विल नॉट यूज द वर्ड निग्लिजेंस इन अ वेरी टफ वे. जैसे पैरेलैक्स रिमूव करना है, पैरेलैक्स कई बार रिमूव करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है और थोड़ा सा एरर जनरेट हो जाता है. वी कैन एलिमिनेट दिस एरर बाय गेटिंग मोर नंबर ऑफ रीडिंग्स. सपोज आई इंस्टेड ऑफ टेकिंग 6 रीडिंग्स, इफ आई टेक 20 readings, then the elimination in human error becomes much more. Fourth is the procedural errors. If
I am not following the procedures properly. If the procedure is not adopted properly, there are bound to be some errors, and that errors we call as the procedural errors. All these errors, the instrumental error, the least count error, the human error, or the procedural errors can be minimized by taking more set of readings. If instead of 10 readings I take 100 readings, I can minimize those errors. We will be studying how to minimize those errors after some time. I can minimize those errors to a great extent. Next set of errors, as we discussed, are random errors. As the name again, as suggested, these are random in nature. Random errors. इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज मैं एक मोटर की स्पीड चेक कर रहा हूँ. I am checking the slip of a motor, induction motor, and there is a voltage fluctuation at that time. So that voltage fluctuation is going to give me error in the reading. So that sort of errors which are beyond my control are called random errors. Same is the case if I am checking the resistance and the battery goes weak, there is a potential drop across the battery, or the potential source is less, then I may get an improper reading and the resistance will not come properly. So normally what we see when we take say n number of readings, most of the readings are within a particular zone. There are some scattered readings here and there. These readings are basically because of random errors. And the major set of readings, there is a range, and this range is because of the systematic errors. The mean value of all these set of readings is known as the mean value, and we also consider this as a true value. How to calculate the mean value? We have already studied in class 10 statistics. That is, if I have taken n number of readings, then what I do summation of all the readings, that is x1 plus x2 plus x3 plus so on up to xn, and divide it by the total number of readings. This is my x mean. This is also referred to as true value, or I can write it as summation I equal to 1 to n xi divided by n. So friends, this is the value which I am supposed to get if I take n number of readings with proper instruments. अगर मैं एक ही रीडिंग लेता हूँ और उसमें कोई एरर नहीं होता है तो most probably I will get this reading. I cannot say that this is exactly a true value because there are certain inbuilt errors into the system. So, but this value is very close to the true value if the number of readings taken are very high. Now let us see what is the error. आप लोग जब भी सामान मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है x प्लस माइनस y. ये जो y है ये एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, ये फ्रैक्शनल एरर हो सकता है, या ये परसेंटेज एरर हो सकता है. नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? x1 minus x mean. The modular value of it or the absolute value of it gives me delta x1. So when I add all the deltas of x1, delta x2, delta x3 and so on to delta xn and divide it by n, I get the mean absolute error. The mean absolute error. This is called delta x mean. This is an absolute error and the readings can be x plus minus delta x mean, or I should say x mean plus minus delta x mean.
Normally, what we get in the market is in this form. It is in the plus or minus. That means the maximum range by which it can change is either plus delta x or minus delta x. Next is the fractional error. Fractional error, as the name suggests, is a fraction of delta x to x. The mean value of the two is called fractional error. And the percentage error is delta, fractional error, or let me say fractional error into 100 gives me the percentage error. So sometimes the equipments what we get in the market, they mention the absolute error, they mention either the fractional error or even the percentage error, like 230 volt plus minus 5%. That is the range given sometimes on the equipments, or sometimes it is given in the form of absolute error. But friends, whenever we take the measurements, they are not the only measurement, that is not the only single measurement. We have equations like A is equal to B plus C, wherein two set of measurements come into picture. So combination of errors, how they result, how they act, we will be studying in our next video lecture. Till then, keep watching the video lectures, keep enjoying the life, be safe, but do not forget to subscribe to the channel. Thank you very much.